Okay, what we are supposed to do over here is that we are supposed to come up with the reaction. We're going to discuss the structures. All right, just a second. Okay, first of all, as I told you, in the esterification reaction, it's actually a reaction between a carboxylic acid and it's a reaction between an alcohol. And those carboxylic acids and alcohols do react with one another and form a bigger structure by also forming a small molecule such as water. Water, as you know, is composed of H2O and can simply be made by H and a combination of OH. So what we are going to do is that we can take hydrogen atom from one of the structures, carboxylic acid and alcohol, and take OH from the other one to form water. The rest of the structure is then combined to form the ester. Let's see how that happens. First of all, let me write the equation over here for your help. We are saying that a carboxylic acid and an alcohol actually gives us an ester and it gives us water. Okay? This is the reaction. Let's take the example of carboxylic acid over here. The carboxylic acid is CH3, and up next we have is C. Next to it is O, and next to it is also OH. Just let me. This is the structure of a carboxylic acid. It has the COH group, which has this structure when it is explained properly in the form of separate bonds. And as it has two carbon atoms, so of course it's going to be ethanoic acid. Here, the exact equation, let me write the exact equation over here, is going to be ethanoic acid plus ethanol would give us ethyl ethanoate plus water. Okay. So what we have over here is ethanoic acid. Let me draw ethanol for you. Is the structure of ethanoic acid clear for you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just a second. Let me draw an alcohol out for you. Alcohol here is going to be ethanol. Of course, the name, eth part in the name suggests that this alcohol is actually made up of two carbon atoms. And in this way, we have the OH bond to the alcohol, and hence we have the whole structure. Now you can see the ethanoic acid and the alcohol in front of you. Now what we are supposed to do over here is actually stepwise. Ji? सर ओ में हाइड्रोजन नहीं आएगा हाइड्रोजन एटम O के साथ hydrogen connected है बेटा. किस O की बात हो रही है? There is one O in the alcohol and there are two O's in ethanoic acid. But remember, if oxygen has two bonds, oxygen has completed its number of bonds. आप किसकी बात कर रहे हैं बेटा? सॉरी सर देखा अब देखा सही है मतलब मेरी two bonds वाली चीज से आपको कंफर्म हो गया, राइट? यस सर ओके, गुड गुड. ठीक है ना? क्योंकि अगर गौर से देखिए, अगर किसी को क्वेश्चन समझ आ गया है अयान का लेकिन आंसर समझ नहीं आया तो आंसर रिपीट कर देता हूँ. यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, वन बॉन्ड टू बॉन्ड उसके कंप्लीट है. ये जो ऑक्सीजन है इसके भी टू बॉन्ड कंप्लीट हैं.
ये जो ऑक्सीजन है ये बना ही डबल बॉन्ड रहा है, तो ऑफ कोर्स उसके भी 2 बॉन्ड्स कंप्लीट है। तो अगर ऑक्सीजन ने अपने 2 बॉन्ड्स कंप्लीट बनाए हुए हैं, नो मोर नो लेस, ठीक है, देन इट इज सेड टू हैव a maximum number of bonds it can afford, and that's a correct structure। ठीक है, ये स्ट्रक्चर्स को करेक्ट देखने के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर के स्टार्ट में मैंने कुछ बॉन्ड्स बताए थे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स एन एटम कैन हैव, और उसमें क्लैरिफाई किया था कार्बन कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 4, nitrogen and phosphorus 3, oxygen and sulfur 2, and for the rest of the atoms such as hydrogen, fluorine, chlorine, iodine, bromine, they can only have 1 bond each। ठीक, so that's how we explain it। अगर आप कहीं पर भी किसी ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर को चेक करना हो, जैसे अभी अयान ने पूछा लेकिन मेरे क्वेश्चन से उसे याद आ गया, तो आपने भी यही करना है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है अपने स्ट्रक्चर को चेक करने का, whether you have drawn it correctly or not। आप उसके सारे एटम्स के बॉन्ड्स को एक मर्तबा देख लें। In this case, the 2 structures in front of you, you would see that every carbon has made 4 bonds, every hydrogen 1 bond, and every oxygen 2 bonds। अगर इतने ही ड्रॉ हैं तो स्ट्रक्चर ठीक है। अगर आप मोर या लेस कर रहे हैं तो probably there is a mistake in the structure। ठीक, ऑर्गेनिक के लिए ये रूल ऑर्गेनिक चैप्टर नंबर 10 के स्टार्ट में पढ़ाया था। ठीक है, so I hope that clarifies and clears everyone out in case of structures। so अभी हमने ये करना है कि हमें इससे एस्टर बनाना है। सही, एस्टर बनाने के लिए हमारे पास फ्यू स्टेप्स होते हैं। ठीक है, स्टेप्स में लिख नहीं रहा हूँ, मैं ज़बानी बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन्हें अपने पास लिखना चाहें तो बेशक लिख लें। इट्स गुड दैट यू राइट द स्टेप्स इन स्टार्ट, लेकिन रिमेंबर you will not be asked to write these steps in exams। you're only going to follow them to make a structure। आपसे कोई ये steps लिखने को नहीं कहेगा। so steps memorize करना जरूरी नहीं है, steps को understand करना जरूरी है। ठीक है, so इसको लेकर चलते हैं आगे। Now the first step is that कि आप इसी तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर एसिड का और इसी तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर अल्कोहल का लिख लें। ठीक है, that is your first step। write the structure of acid first and alcohol after। if you want to note that point down, note it down। write the structure of acid first and alcohol after। step number 2 is to actually हम इसी स्ट्रक्चर को दोबारा देख लें। In step number 2, what you are supposed to do is to take both the structures। This time, what you are supposed to do is to invert the structure। मैं इसे पूरा 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूं, आप देखेंगे 180 डिग्री पे मैंने इसे रोटेट कर दिया। This is the second step। Point number 2, you might want to note it down, is that you need to invert the structure of alcohol sideways। You need to invert the structure of alcohol sideways। जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड आ जाए, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाए। आप देखेंगे मैंने एग्जैक्टली इसे साइडवेज इन्वर्ट कर दिया। एसिड को इन्वर्ट नहीं किया, अल्कोहल को इन्वर्ट किया। दैट इज आवर सेकंड स्टेप। ठीक है, आर वी क्लियर सो फार? क्लास फर्स्ट 2 स्टेप्स क्लियर हो गए सबको? Yes, sir. Yes. Okay, good। Then what you are going to do is that you're going to take H out of alcohol and OH out of acid। You might want to write it down। Take the H out of alcohol and OH out of the acid to produce water। ठीक है, this would produce water for you। ये आपके लिए water produce कर देगा। Clear? It's very easy। We have taken H out of the alcohol, we have taken OH out of the acid, and combining these, we get the formula H2O, which is basically water। ठीक? Okay, sir. That's your third step। If you have written the third step down and you understand it, let me know, girls and boys both। Yes, sir. Okay, what about girls? Girls, are you clear? Any girls over here? Yes, sir.
Good, good. All right. Moving on to our last step. In the last step, what we are going to do is that we're going to connect the rest of the structure. All right. So connecting the rest of the structure is very easy. When we'll connect the structure, let's start from the left-hand side. On the left-hand side, what do we have? We have the CH3 on the left-hand side. What do we have next? We have a carbon that is connected to an oxygen, and then we also have an oxygen. Sorry. And then this much part is taken from the acid side. What we are going to do is that we are going to connect the leftover part of alcohol over here. What was the leftover part of the alcohol? The leftover part of the alcohol was an oxygen atom that was actually connected to Carbon. yeah, two carbon atoms, one after another. The first one was CH2. Just a second. And the other one was another carbon. That's about it. Clear? This is the structure of ethyl ethanol. This whole structure is actually ethyl ethanol. Now, how do we come up with the name ethyl ethanol? The nomenclature has separate steps. These were the steps to draw a structure of an ester. You have written 4 steps. The first step was to write the acid first and alcohol after. The second step was to invert the structure of alcohol sideways. The third step was to take hydrogen from alcohol and OH from acid to form water. The fourth step was combine the rest of the structures to form the ester, which is this. Now, there are 3 steps, separate steps for nomenclature as well. What are those steps? First, number 1, you might want to note it down. Ester has its name in 2 parts. Ester has its name in 2 parts. The first part comes from alcohol, while the second comes from acid. Point Okay, number sir. 2. Point number 2. The name of the alcohol ends at anol, A-N-O-L. As you can see, ethanol में हमने उसका नाम anol पे end किया है. The name of the alcohol ends in anol, A-N-O-L. ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. अल्कोहल के नेम में हमारे पास आता है एनॉल. हम इसे किस में कन्वर्ट करते हैं? हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्चुअली, आपने देखा होगा कि हम इसे कन्वर्ट करते हैं किस में? हम इसे कन्वर्ट कर देंगे आइल में. The name of the alcohol ends in anol is then converted into ail. एथनॉल है तो उससे क्या बना? इथाइल. और से देखें, अल्कोहल का नेम एथनॉल था, उससे हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेम ऑफ एस्टर बनाया और वो इथाइल है. This is the second point. Let's come to the third point. The third point is the name of the acid ends in enoic acid. और से देखें, हमारे पास enoic acid में नेम कन्वर्ट होता है. ठीक है, बल्कि हम इसे एनोइक एसिड की बजाय अपनी प्रैक्टिस के तौर पे इसे ओइक एसिड बता देते हैं. ठीक, और हम इसे किस में कन्वर्ट करने जा रहे हैं? दिस एनोइक एसिड इज देन इज कन्वर्टेड इनटू OH. ठीक, दिस इज द थर्ड स्टेप. सो एथनोइक एसिड था तो एथनोएट हो गया, द सेकंड पार्ट ऑफ द नेम. There you go. The 3 steps for nomenclature are also complete.
That's how we come up with a name. In your papers, in your past papers, you would see that you will need to come up with the structure as well as the name of the ester. ठीक है? अब दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है. ऐसा भी हो सकता है कि आपको अल्कोहल और एसिड के स्ट्रक्चर्स जैसे मैंने सामने ड्रॉ किए, ये स्ट्रक्चर्स पेपर में दे दिए जाएं और आप उस इन स्ट्रक्चर्स से पूरा स्टेप करके पहले अपना एस्टर बनाएं और बाद में इनकी नेमिंग के जरिए उसका नेम निकालें. ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन में सिर्फ एथनोइक एसिड और एथनॉल की तरह लिखा हो, आप उनके स्ट्रक्चर्स भी खुद ड्रॉ करें, फिर सारा इससे करें और फिर नेम उसका खुद निकालें. ठीक है? Both of these types of question are a part of past papers, and you are supposed to be able to go with any way, whether they give you the names as a part of question or they give you the structures as a part of question. However, this page contains all the information. चाहे आपको उन्होंने names दिए हो, चाहे आपको उन्होंने structure दिया हो. Name से सिर्फ name निकालना बहुत आसान है. Enol को I'll में convert करें, first part of the name. Oic acid को OH में convert करें, second part of the name. There you go. Name आपके पास आ गया. Name 2 easy steps में हो जाता है, दोनों parts में हो जाता है. Structures के लिए हमें 4 steps करने पड़ते हैं और उससे फिर हमारे पास 2 products आते हैं. Sometimes आप देखेंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन में स्पेशली स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 2017, 17, 18, 19 के पास्ट पेपर्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि वो बच्चों से पूरा क्वेश्चन देते हैं एस्टर का, ठीक है, और बजाय के वो आपसे ये पूछें कि आपका स्ट्रक्चर या एस्टर का नेम क्या है, वो प्रोडक्ट नेम्स एंड फॉर्मूलाज पूछ लेते हैं. अब बच्चे ये करते हैं कि बच्चे इस रिएक्शन में एस्टर को बड़ी मेहनत से बनाते हैं, एस्टर का स्ट्रक्चर बनाते हैं, एस्टर का नेम बनाते हैं और वाटर का नेम और स्ट्रक्चर बनाना भूल जाते हैं. There you go, you get your marks cut. This reaction produces the ester as well as the water. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. अगर वो आपके प्रोडक्ट्स के नाम पूछ रहे हैं तो एस्टर और वाटर दोनों जाएगा. एक और ट्रिक, वो आपसे प्रोडक्ट्स की बजाय ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पूछ लेते हैं, फिर आप वाटर ड्रॉ नहीं करेंगे बेटा. वाटर इज नॉट ऑर्गेनिक, वाटर डज नॉट कंटेन कार्बन. ठीक? So these are the tricks that they usually apply when they're asking a question about ester. Hopefully when you'll take a look at past papers, you'll get to know how they ask the question and how they trick their students. Any questions so far?